Hello everyone, welcome to Quick Revision with Monika Ma. So in addition to these series, I have brought another poem, that is poem number 2, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. So our technique would be the same, like discussing in the SIFT manner: symbol, imagery, figure of speech, and then the tone. Tone is again ambiguous one, very appealing one. Appeal to the influential people of the society to do something good for the children of to do something good for slum children. And again in book, like this section about the poet, in this section it is written: an elementary school classroom in a slum. He has concentrated on the themes of social injustice and class inequality. So theme would be social injustice and class inequality. That theme you have to write. Again, these are very short series, guys. Here we will be discussing only the relevant points of the poem or chapters. So I hope that we are able to deliver good kind of understanding to all of you. In first stanza, there are 4 stanzas of this poem basically. In first stanza, he has described about the state of slum children, like how they look like. In second stanza, Stephen Spender has talked about the environment of the classroom, and then in third stanza he has given his own perception of these children, and in fourth stanza he is seeming like heartbroken and appealing to the readers or the listener of his poem or listener of his speech basically. Whenever he went to any kind of area, wherever he tried to motivate other to help these people, so he appeal to those people, like do something good, to do bring some changes in education. So we will discuss step by step. In first stanza, like far from gusty waves these children's faces, here he has described the basically the appearance of the slum children. Far from gusty waves these children's faces. Now slum children, he has compared these children with the rootless weeds. Here in 2 ways you can take example, or in 2 ways you can understand this particular line. Like he has compared here, like weeds are scattered in the same manner. Hair are scattered, unkempt hair, and they belong to unwanted section of the society, very weaker one. Gusty, far from gusty waves signifies natural bounties, free gift of the nature. They are far away from that also. Hair torn round their pallor. Pallor stands for pale face. So very unkempt, very unorganized way. Tall girl with her weighed down head. Weighed down head indicates lots of responsibilities or suppressed state of mind, tired one, like she is very much tired. Now I must tell you, like this is in elementary school classroom where basic teaching is done, there you can find each and every age group out there. Okay, so one tall girl is there, weighed down head. Paper seeming boy, metaphor, is being compared to paper, that indicates his malnutrition. He is very malnourished, okay, with rat's eyes. So rat's eyes indicates again metaphor. Rat's eyes indicates like he is feeling very hungry, or maybe in search of food, like rat on his body. Eyes are prominent. Similarly, on the body of this child, eyes are very prominent. He is in search of something like which can be useful to him. Then another one student is there who is very stunted. He has hired a genetic disease, that is Narrel disease. So unlucky ear. Ear is new pronunciation. Some people call it higher till now, so you can speak that, but ear is the right pronunciation. That means successor. That means getting disease. Unlucky ear is oxymoron. Like if you are becoming successor of someone or legal nominee of something,
you get wealth or something like good things from them in properties, in the form of properties and other things. But here he is from that section of society where forget about wealth, money and other areas of life. He has got diseases, that is genetic diseases from him. Narral disease is like problem of bones, and that is quite cleared from his appearance only. So next line is reciting a father's narral disease, his lesson from his desk. He is sitting, he cannot stand, he is reciting his lesson from the desk only, and his bones are reciting his disease. So bones are personified, and his disease are shown in this manner, that is imagery. At back of dim class, again dim classroom, very dull classroom environment, unnoted sweet and young, irony, if unnoted, how sweet and young cannot be unnoted, if unnoted then cannot be sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game. So imagination, that actually signifies this classroom environment is very dull, very gloomy as compared to to his imagination. So tree room indicates his imaginary world, right? Second stanza we are talking about classroom. Some people teach you like donations and other things are basically given. No, here it is written on sour cream walls. So he has given description of walls, how walls are decorated or adorned with, basically are not adorned, but what things are implemented on the or put on the wall. So sour cream indicates very dull and like unkempt walls, पेंट वेंट उखड़ जाना किसी चीज़ का. एंड डोनेशंस रिटन, लाइक आपने देखा ही होगा कहीं किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक लोग कुछ भी देते हैं तो वो लिखवा देते हैं उस पर, तो डोनेशंस रिटन. शेक्सपियर हेड मीनिंग पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, क्लाउडलेस एट डॉन, सीनरी वगैरह ये सब दिया है जिसमें सिविलाइज्ड रोम है, टेररलेस वैली है, इन सब के एग्जाम्पल मीनिंग आपको बुक में मिलेंगे. मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ जिसमें आपको दिक्कत आएगी. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड एट्स वर्ल्ड, तो उस वॉल पर एक मैप भी है जो कि ओपन हैंडेड है. ओपन हैंडेड मैप personifies, so it is personification. Awarding the world its world, meaning मैप कौन बनाता है? कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर किसको इंडिकेट करते हैं? सिविलाइज वर्ल्ड को, एजुकेटेड वर्ल्ड को. सो उन्होंने अपने ही वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है इस मैप के ऊपर. दे हैव नॉट रिप्रेजेंटेड एनी स्लम. आपने भी अभी तक मैप में क्या क्या लोकेट किया होगा? रिवर्स की होंगी, डेजर्ट्स के होंगे, बहुत सारे जोग्राफिकल प्लेसेस लोकेट किए होंगे. स्लम कोई लोकेट नहीं करता है. सो बेसिकली ओपन हैंडेड मैप, अगेन बायसनेस है. ओपन हैंडेड, यू आर वेलकमिंग समवन विद ओपन हैंडेड, मीनिंग कि आप यू आर अनबायस्ड विद एवरीवन, बट आप उसमें क्या कर रहे हो? अपने ही वर्ल्ड को डिपिक्ट कर रहे हो. सो इन लोगों के लिए वो एक काइंड ऑफ बायसनेस है, राइट? This explanation is important, and yet for these children, these windows not this map their world. So here in second stanza it is shown what is map. It is a kind of window to peep into the world, or a direction where you can find out, or a way to know about something. But in बच्चों के लिए जो classroom window है, this is map, because what they can actually see in reality is not shown on the map, and what is shown on the map that they cannot see in reality. So they are taking window as their map. यहाँ बच्चे confuse हो जाते हैं. एक बार में मैप ही मैप रहेगा जब इनकी इंस्पेक्शन होगी, राइट? लेकिन अभी सेकेंड स्टेंजा में जो विंडो है, क्लासरूम विंडो है, वो मैप है, राइट? बिकॉज व्हाट दे आर लुकिंग अराउंड दैट इज नॉट बीइंग शोन ऑन द मैप, राइट? सो वेयर ऑल फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर है, ब्लर्ड है, विजन नहीं है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, नैरो स्ट्रीट, सील्ड इन विद लेट स्काई, डल स्काई. Sky represents your growth, your progress. That is dull. If that is dull like lead metal, so that is not bright, meaning there is no scope of progress in their life, no hope. And far far from rivers, capes and stars of words. So natural bounties से तो दूर हैं ही, लेकिन stars of words indicate क्या करते हैं? कोई scholar भी उनकी surroundings में नहीं है जो उन्हें अच्छे words के through, उन्हें एक अच्छी लैंग्वेज के थ्रू मोटिवेट कर सकें. यू नो, यू कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन वेयर
it seems to us that how people are talking to us, they are very abusive or they are very rude, or we can say that कि अगर कोई भी हमसे ऐसे बात करता है तो हम बात करते हैं, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो ये उस डिप्राइव्ड स्टेट, उस डिप्राइव्ड सेक्शन की बात हो रही है जहाँ पर शायद उनको अच्छे वर्ड्स सुनने में ही ना मिलें। तो यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि सभी के सभी, दैट आई हैव गिवन एग्जाम्पल टू यू, कि अगर हमसे कोई ऐसे बात करता है तो हम कैटेगराइज करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि किस सराउंडिंग में कोई है। वो आपको एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली का पर्सन भी मिल सकता है, अब्यूजिव, वो किसी भी, तो हम उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि ब्यूटी ऑफ वर्ड्स नहीं है वहाँ पे, दैट इज स्टार्स ऑफ वर्ड्स। थर्ड स्टैंजा में इन्होंने अपने परसेप्शन को डिपिक्ट किया है कि बच्चे शेक्सपियर को विकेट मानते हैं। शेक्सपियर इज विकेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शेक्सपियर इज विकेट? First thing, Shakespeare is epitome of literature, height of literature, and these children don't even know the L of literature, ABC of the literature. How would they value his contribution to the literature world? So how would they appreciate which picture is hanged on the wall? Plus, second thing which is considered, Shakespeare work talks about the influential people's world. His work majorly talks about. So some kind of in some kind of words you can say they are feeling left out. So he is wicked according to them. And Stephen Spender is mentioning that. Map a bad example. Bad example again oxymoron. एग्जाम्पल गुड होता है जो कि समझ में आए, बैड हुआ तो आपका ऑपोजिट चलेगा। जिनको भी पोएटिक डिवाइसेस में दिक्कत है प्लीज रेफर वीडियो नंबर 1 पोएटिक डिवाइसेस। एंड मैप बैड एग्जाम्पल है बिकॉज वो मैप वहाँ लगाया गया है उनको इंस्पायर करने के लिए कि वर्ल्ड में ये देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन देम इन अ डिफरेंट मैनर। उस मैप को देख के इनके अंदर टेम्पटेशन उठ रही है स्टीलिंग की, क्राइम, और समहाउ बाय हुक बाय क्रूक किसी भी तरह इन्होंने उस वर्ल्ड को अचीव करना है। एंड देन शिप्स सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील लाइज दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स इंडिकेट करते हैं उनकी स्मॉल हर्ट्स को, और फ्यूचर जो उनका है फॉग टू एंडलेस नाइट, मीनिंग ब्लड विजन दैट कैन नॉट बी एंडेड। एंड स्लैग हीप इज ढेर कूड़े का, लाइक मिट्टी का, इट इज़ अ हीप ऑफ मड और गार्बेज। उसी पे दे आर सिटिंग लाइक, जैसे एक स्टोन पे आप कुछ बॉटल तोड़ दो तो पीसेस स्कैटर्ड होते हैं, सिमिलरली स्टोन को कंपेयर किया गया है स्लैग हीप से, मेटाफर, और बॉटल बिट्स एंड स्टोन्स को कंपेयर किया गया है इन बच्चों के चाइल्डहुड से, इन बच्चों से। सो बेसिकली इस एरिया में उनका जो लाइफ है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उनका टाइम भी और उनका स्पेस भी, और यही एज इंपॉर्टेंट है और यही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉगी स्लम में। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, तो उनके मैप को इतना बड़ा ब्लॉट कर दो जितना बिग इज लाइक डेथ। सो स्लम इज जस्ट लाइक लिविंग इन अ हेल, इट इज ग्रेटर देन हेल, एंड और यू कैन से इक्वली it is like living in a hell। so वो actual condition show करो मैप के ऊपर। फोर्थ स्टैंजा में जो स्टीफन स्पेंडर अपनी बात रखते हैं वो ये कहते हैं कि स्कूल में जो एजुकेशन है वो बिल्कुल भी सिंसियरिटी के साथ टेक प्लेस नहीं होता। कब तक? जब तक ये इंस्पेक्टर, गवर्नर, विजिटर कोई नहीं आते। जब भी whenever these people came there to inspect, जो लोगों ने भी डोनेशन दिया है, जो लोग भी चैरिटी वर्क करते हैं, जो लोग भी सोशल वर्कर बन के काम करना चाहते हैं, सो वेन एवर दे कम, ये जो विंडोज़ हैं ये इनकी लाइफ में बंद हो जाती हैं कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्स का मीनिंग आपको बुक में दे रखा है, डेड ग्रेव्स जो ड्रॉर्स के फॉर्म में बनी होती थी अंडरग्राउंड, और ये जो विंडोज़ हैं वो लिड की तरह काम करती है, और क्लासरूम में उनको उन लोगों को इसी मैप को देखते हुए अपने सारे आंसर्स करने होते हैं। अब यहाँ ये अपील करते हैं ब्रेक ओ ब्रेक, रेपिटेशन है फार फार की तरह, कि आप ये सब ब्रेक कर दो इससे पहले कि ये पूरे वर्ल्ड को ब्रेक करें। एंड देन रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। दैट मीन्स हर कोई हम स्काई के कलर को स्काई ब्लू कलर बोलते हैं, बट देयर इट्स ट्रू नेम इज, इट्स राइट नेम इज योर। आप और हमको अगर कोई सीनरी में कलर करना है, इफ़ यू आर नॉट सो गुड अबाउट कलर्स एंड इफ़ यू हैव नॉट been to beaches and all, so maybe I can draw brown color to sand, or I can
do some other color. But जो गया होगा उसे पता है जब सनलाइट पड़ती है तो वो एकदम गोल्डन कलर की सैंड दिखती है, तो बच्चे अगर गोल्डन कलर का सैंड पेंट करना चाहते हैं तो उनको करने दो। मीनिंग उनको थ्योरेटिकल एजुकेशन मत दिखाओ, उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन में जीने दो एंड शो देम एक्चुअली इफ यू वांट टू टीच देम द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन among shades of green, so let them take to the field, there they will see the difference, grass green, leaf green, okay, mehndi green, and there are so many greens out there, so they can see, they can ask, let their tongues run naked into books, let them express on their own. Do not force your opinion onto the children, okay, appealing, Stephen Spender is appealing to देम कि एजुकेशन का जो रोल मॉडल है वो ये होना चाहिए कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे, उनके ओपिनियंस को सुनो, उनके ओपिनियंस को बताना शुरू करो. डू नॉट फोर्स योर ओपिनियन, लेट देम एक्सप्रेस एंड लेट देम ask whatever they want to ask. So the white and green leaves open. So white is basically paper, representing paper, education, and green nature. So education and nature, ये दोनों चीज़ों को आपको सही देना पड़ेगा, because history theirs whose language is the sun. और वो conclude करते हैं कहते हुए कि only those people have made their mark in the history who has the language of sun, meaning who has worked like sun. So you might have heard that quote from APJ Kalam's, like if you want to shine like sun, you have to burn like sun. So what are the characteristics of the sun? That is basically perseverance. आपने कभी सन को तो देखा नहीं, सन का नहीं आज मैं मूड में नहीं हूँ, मैं नहीं आ रहा, मैं छुट्टी पे हूँ 6 महीने के लिए. No, he cannot say like that. So when we observe nature, when we observe our surroundings, we look at the areas where we find out that everything has specific certain orders: perseverance, discipline, desire, giving, taking, sharing, learning, observing. हर चीज़ का एक एक्सपायरी टाइम भी है, बर्थ टाइम भी है. सो if you want to be something in this world, if you mark your space in the history so that your posterity can can remember you. So basically, very basic thing which you require is the power of education that can ignite your passion like no ways to explain that can ignite your passion and you can shine like sun. So I have written some words here or phrases here in the form of simile and all. You can see like rootless weeds, untidy and unkempt hair, unwanted section, like bottle bits on stones. As I explained you, आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको रीड करो तो समझ आ जाएगा. लाइक कैटाकॉम्स, डार्क एंड डिंजी रूम्स, स्लम एज बिग एज रूम्स. मेटाफर आपके हैं, फ्यूचर इज पेंटेड विद द फॉग, दैट इज फ्यूचर इज ब्लर्ड बाय होपलेसनेस एंड लैक ऑफ एम्पैथी. Then lead sky is dark and dull, just as metal, no hope of progress. And spectacles of steel, basically अगर हम कहें तो इसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है समझने में. Spectacles of steel क्या है? बेसिक नेसेसिटी है, विजन क्लियर नहीं होगा जब तक तो कैसे आगे देखेंगे. देखना बहुत सिंपल है आज की लाइफ में, लेकिन उनको वो नेसेसिटी भी उनकी फुलफिल नहीं हो पाती. और मेटाफोरिकली इसका मीनिंग क्या है कि वो जो विजन है, वो जो स्पेक्स उन्होंने लगा रखे हैं दूसरों के दिए हुए सोच है, उनकी अपना विजन नहीं है, उन्होंने खुद से क्रिएट किया हुआ नहीं है. जिसने जो बोल दिया वो ब्लर्ड विजन इम्प्लाई हो जाता है उन पर, वो उसी को सच मानने लग जाते हैं. सो दैट इज देयर स्टार्स ऑफ वर्ड, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. देन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अनसर्टेन एंड इटर्नली डार्क फ्यूचर. आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई हो, और ये एक ऐसी पोएम है जिसमें जनरली बच्चे बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं. और आप लोग ज़रूर अपनी जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करें. वी आर ओपन टू फीडबैक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.